Assalamu alaikum guys, hope you all are doing great. Welcome back to my channel and welcome back to another unboxing video. So today I'm gonna unbox this Kenwood Electric kettle जिसमें आप पानी वार्म भी कर सकते हैं और बॉयल भी कर सकते हैं। जैसे कि पैन में आपको पानी वार्म करने के लिए 3 मिनट्स 4 मिनट्स लग जाते हैं और इस केटल में आपको विद इन 1 मिनट वार्म टू बॉयल वाटर मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक नीड। और वैसे भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें तो और ज़्यादा कि आपने ग्रीन टी बनानी हो, कॉफ़ी बनानी हो, आप जस्ट इसमें पानी वार्म करेंगे और अपना टी बैग डालेंगे कप में और आपका ग्रीन टी रेडी है। सो इट्स अ वेरी क्विक एंड कन्वीनियंट वे ऑफ मेकिंग ग्रीन टी व्हाटएवर यू लाइक। और सो बिफोर आई स्टार्ट द अनबॉक्सिंग, इसका जो नेम है वो है ट्रू केटल और मॉडल है JKP230। It uses 2.2 kilowatts energy and 1.6 liters capacity. It's a decent size, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं साथ when you're traveling. It can take up to 6 cups at a time. आप इसमें 6 cups पानी बॉयल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 cups। और now let's start the unboxing. So firstly it has this power base. It contains a cord wrap जिसमें आप कॉर्ड को easily fold कर सकते हैं to make it short or for packing. Then we have this kettle. It comes with a flip top lid और इसके लिए एक lid release बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करने से आपका lid ओपन हो जाएगा। Then we have a filter. It works as a strainer. अगर आपने कोई चीज़ स्ट्रेन करनी है तो आपको स्पेशली स्ट्रेनर रखने की ज़रूरत नहीं है। Both sides have these water level windows. You can add up to 6 cups of water, not more than that. Now let's see how it works. I have around 1 cup water. As you can see, the window shows 1 cup water level. जितना मैंने इसमें ऐड किया था
दिस इज़ द पावर स्विच। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है और जब ये ऑन होगा तो इसकी इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जब पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो ये ख़ुद ब खुद ऑफ हो जाएगी।